So we'll first discuss few basic terminologies which are required to understand before we do any program based on that. So I would like to start with what is mean by data, then what is role of data types, then here comes the role of data structure or why we need them. Then we'll see what is mean by abstract data type or ADT, which usually we talk about in concepts of data structures. Okay, so the flow will go like this. So very first, what is mean by data? So you already know every day, every place, whatever task we do, we are dealing with this data. So in your own words, can someone tell me what do you understand by the term data? जो Group भी of आप information. group of information. Okay, someone Raw group else. of information. It is raw, not processed. Okay, yes, not mine. So you are talking about information. So let me clear one thing. Whenever we process data, it gives us some information. So data is, can I say raw information? Because unless and until we process it, we can't say that it is informing something. Okay, for example, if I write something like this, okay, random format data, right? It is not giving us any information, right? But अगर वही मैंने कुछ proper format में लिखा, for example, थोड़ा सा formatting करते हैं, let us say, I'm converting this into a date format. Let us say this is my initial, Urmila, Shrikant Pawar, and let us say this is my roll number. अगर मैंने इसको थोड़ा tabular format में लिखा, and similarly, if I add some more information further to this, it is indicating key whatever data I'm writing, everything is following some format. For example, firstly, it is something like month and date, then is the name, initial, followed by the roll number. Okay, so when we process data, we get some information out of that. Now, why we need data? That is very next question. So without data, we can't do anything, right? Whatever problem we need to solve, whatever program we are about to write or code, अगर आपके पास डेटा नहीं है, इनपुट नहीं है, we can't do anything. So उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप स्टोर करते हो मेमोरी में, तो प्रोग्राम के लिए इजी हो जाता है. It saves lots of time and memory also, right? So we need data types. Correct? For example, the above data which I have wrote for two people or two entries, in order to store date, either I can use inbuilt date class if that programming language supports, or I can go with string because it's not just involving numbers, but if I want to separate month and date, I have to use a separator. So string can help me. Similarly, for writing name again, I can go with string, right? And for writing roll number or any integer related data, I need integer, right? Data types are used for that purpose, which just represents what is the form of that data, right? So that while handling or while processing, it becomes easy for us as well as for our machines or for our compilers. Now, what is data structures then? From your side, let us see if I could get some answers. Why we need data structures? अगर आपके पास डेटा टाइप है ऑलरेडी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डेटा कौन से टाइप का है, कौन से फॉर्मेट का है, whether it is integer, character, float or double or string, then why we need data structures? To Yes, Sagar. increase the efficiency of the program or searching algorithm. So if it's stored in some format, we can Okay. quickly search.
Okay, so you are talking about if to making our program efficient. Okay, this is one reason why we use data structures. Then you talked about memory, I guess. Correct. So to keep everything sorted. For example, you have a cupboard or a bookshelf, and you are studying 4 5 different subjects. If you separately keep book of one subject in one shelf separately, अलग से रखते हो, तो जब भी आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, you can directly access that respective shelf only, right? No necessary, or there is no need to search for that data structure book in other shelves, right? Similarly, the case is here for data, right? I will write in short. To keep your data in organized way, in organized format, we are using data structures, or I can say data structures help us to keep our data organized, or more briefly or in more shorter words, I can say that proper organization of data is nothing but data structure. Now, in my own words, what I do say for data structure is it's simply a container for your data, right? It's holding your data by its own way. For example, we are going to study further. Array is one data structure. Okay. Linked list is one data structure. Stack is one data structure. Queue is one data structure. These many data structures you people are going to learn in this semester. Next semester, you will come across trees. Okay. You come across heap. Heap is one type of tree. Okay. Full binary tree is called as heap. You will learn about hash maps. Okay. So these are examples of data structures. So just understand key in order to organize your data in more efficient way, in more efficient manner, you are using some container which is called as a data structure. But data structure is not just holding data. One more point to be added here. Otherwise, there won't be any difference in your data types and data structure, right? क्योंकि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर, लेट अस से int x. So I can say that this is integer type of a data structure. Can I say? Because x is holding a data which is of type integer. So according to my recent definition of data structure, can I say this int x is a data structure? This is my question to you all. No, ma'am. In data structure, we have more than one value. More than one value. Okay, so chalo, I will do one more thing here. If I say int capital X, let us say of size 10, मैंने इसको array बनाया. Now will you say? Yes. Who was it? Kapil, I guess. More than one value. Yes, ma'am. X में भी तो मैं overwrite कर सकती हूँ ना. Initially suppose मैंने x equal to 10 initialize किया code में. Afterwards in my program I felt that no, I want to store 20 in x. So can't I say x as a data structure then? What do you see? Okay. Let us clear this concept. I mean, it's primitive data structure. It is static. क्या static है? Variable? Yeah, integer type of data. What is मैम वो static? मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक हो जाएगा. अच्छा ये वाला int x10. Yes, Fine. ma'am. We are dealing with all that stuff ahead. Memory allocation, static, dynamic. Whatever points you are saying, all are valid. Okay. But मेरा जो question है वो थोड़ा सा अलग है. कैसे कि only data store करना मतलब data structure नहीं होता है. Are you able to do any operations on that data? If yes, then it is a data structure. So data structures matlab holding data in proper format plus
doing some operations, primitive operations, or if it allows us to do some operations on that, then we call it as a data structure. Let us say the example of these two things, int x and int capital X of size 10. फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल वेरिएबल है, उसमें बस आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दैट्स इट. बट इस x के साथ जो 10 एलिमेंट्स है उसमें आप 10 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वो 10 एलिमेंट ओवरराइट कर सकते हो. इवन ओवरराइटिंग इज अलाउड विथ वेरिएबल आल्सो, बट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर अदर ऑपरेशंस व्हिच आर परमिटेड टू डू ऑन दिस डेटा स्ट्रक्चर. सो जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं लाइक array, linked list, stack, queue, every data structures allows us to do some operations on that. Okay, and this class allows us to do both of these things in one single place or at one single place, right? आप OOP में भी और डिटेल में पढ़ोगे what is mean by encapsulation and how class allows us to encapsulate. Encapsulation का मतलब वही होता है envelope type. आप बहुत सारी चीजें एक ही साथ बाइंड करके स्टोर कर रहे हो या रख रहे हो. So you are storing data also and doing operations also in the same unit. Okay, and we call it as a class, right? So that is correct definition of data structure. Now let's next go what is mean by ADT. Then I will write here full form. Data type, right? Abstraction, one of the important feature of object oriented programming like C++ or Java or like even Python. So abstract का मतलब क्या होता है? Not to show everything to the user. Whatever is necessary, only show that information to the user. That is meant by abstraction. And the ADT word is taken from that definition of abstraction, abstract data type. So I can write any data structure as abstract data type. मतलब, for example, अभी क्लास आपको शायद से हमारे सेशन में नहीं स्टार्ट हुआ है तो मैं डिटेल अभी नहीं जा रही हूँ. आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टर्म टू यू पीपल कि एडीटी में और डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. जैसे कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, सिंपल इक्वेशन डेटा प्लस ऑपरेशंस जब एक साथ आते हैं then we call that yes data structure is here. Then what is meant by ADT? So अभी मैंने एक मिनट पहले क्या बोला, I can write any data structure as an ADT. मतलब मैं डेटा भी स्टोर कर रही हूँ, उसके साथ कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस भी इंप्लीमेंट कर रही हूँ, but I am applying some set of rules for those operations and for that data, right? These rules are called as axioms. Constraints आप कुछ सेट करें. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्लास लिखना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, ओके, आई एम राइटिंग ADT हियर. तो मैं यहाँ पर पहले बता रही हूँ कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में से मैं फिक्स्ड क्या क्या स्टोर करने वाली हूँ. सो लेट अस से roll number, right? Then let us say I'm going to store name, only this much. Then in public section, suppose I just want to store data and display data. तो मुझे बस दो ही member functions चाहिए to store student information and to show that information, right? जबकि मैं और भी कुछ डेटा यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, right? I can have student address, I can have student mobile number or student results, previous year's result. I can update the existing information. I can delete any student's data, right? But if I write only this much in my class declaration, it is becoming ADT क्योंकि मैंने कुछ strictly लिखा है
कि ये दो जो डेटा मेंबर्स है मेरे रोल नंबर एंड नेम array of characters ये मैं प्राइवेट रख रही हूँ so that no any outside function will access this, right? Only the store function and show function is allowed to use roll number and name. So this is one type of restriction which I am giving by writing these two members in private section, right? And I'm writing these two methods, only these two methods. Okay, so मैंने क्या किया, क्लास एज एन एडीटी लिखा. ओके, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग विथ ओपी कॉन्सेप्ट राइट नाउ. आई जस्ट वांट टू फोकस on data structures part, but I want to differentiate between these three terms: data, data type, data structure, and ADT. I hope you got this clear, what is difference in these four things. Yes, ma'am. But ma'am, what did you say the major difference between data type and data structure? डेटा टाइप जस्ट रिप्रेजेंट कि आप उसके आगे जो भी वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर लिखने वाले हो उसका टाइप बताता है वो. इट जस्ट हेल्प्स योर कंपाइलर फॉर मेमोरी एलोकेशन. जैसे कि इंट एक्स लिखा तो कंपाइलर को ये समझ में आता है कि एक्स इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल विच विल होल्ड इंटीजर टाइप वैल्यू. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑपरेशन विच आई एम गोइंग टू डू ऑन एक्स. But when you write it as a data structure, for example, I will say this as a data structure, int x 10, then array के साथ जितने भी possible operations है, I can insert any element into array, I can delete any element from that array, I can access each and every element from that array, I can display that complete array. So data structure मतलब holding data plus doing some operations on that data. That is a data structure. जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा. Was asking this question, difference between data type and data structure. Come again. Yes, ma'am. Me, Kapil, Kapil. clear हुआ कि नहीं हुआ? Shall I give some No, better ma'am. example? It's clear. No, clear. Okay, good. Now, before I start with the program for array, because first data structure which I am going to start with is array. But उसके पहले एक बहुत important concept है जो मुझे डिस्कस करना है. We do everything with it, but we are not looking in depth every time into that variable. What it is? Because, हाँ, go ahead. A container kind. हमने डेटा स्ट्रक्चर को भी कंटेनर बोला. You are correct. It's one type, one way to contain your data, right? Correct. Is it Sagar? Yes. Yeah, ma'am. correct. It's a way to assign your data or new data to a particular variable whenever Okay. required and not dynamic. I mean, instead of storing it statically, a variable can have changes in its value. ओके, अभी आप स्टैटिक एंड डायनेमिक जो बात कर रहे हो ना, वो जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना तब मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी कि व्हाई इट मैटर्स टू डिक्लेयर मेमोरी स्टैटिकली और डायनेमिकली. नाउ माय स्कोप इज टू डिस्कस few very important characteristics which are associated along with the variable. So variable is a container, as you said correctly, which holds your data for some amount of time. That some amount of time You is can say nothing but your, temporary. yes, when your program is executing for that amount of time, right? Once your program terminates, there is no variable, there is no memory, either it is a static or a dynamic. Correct. So variable के पास क्या क्या होता है, और what happens whenever we say int a. अभी python में आप declaration नहीं करते हो, you directly assign value and then your compiler, no, interpreter decides whether to allocate 2 bytes or 4 bytes requirement. So data type ऐसा कुछ यूज ही नहीं करते, इसलिए declaration and initialization
ऐसा कुछ डिफरेंस ही नहीं है पाइथन में. बट एज नाउ वी आर डीलिंग विथ C++, so we need to understand it very carefully. So what happens in memory whenever I say int a? This is just a declaration. Okay, this is not initialization. उसके आगे जाके अगर मैंने ये किया कि a equal to let us say 10. Okay, now it is initialization. Initialization of your variable. अब इसको variable क्यों बोलते हैं? Because its value may vary during your code, during your program, during that variable's lifetime. That's why we are calling it as a variable. We can also have constant variables whose value should not get changed, but still we will call it as a variable because इसके कुछ properties है जो हम discuss करने वाले हैं. तो when I say int a, compiler, suppose मेरे machine के case में it is going to allocate 4 bytes to a single integer. Then in the memory it will allocate 4 continuous bytes to a variable a. When I say a equal to 10, value 10 is written at that memory location. Okay, I hope all will agree to this. अभी हर एक variable को what are the characteristics or properties which are associated with that variable? सबसे पहले उसको name होना चाहिए, होता ही है. Every variable is having a name. जैसे कि हमारे case में it is small a, right? Then every variable should have a type. In short, data type. In our example, it is integer, which helps our compiler to allocate some amount of memory. Correct. Then what else? Can someone tell me? Memory address, memory Value. location. Memory location, memory address. I will write. Okay. Correct. It is correct. Someone else is also saying A value of variable. value of a variable. Okay. Value. Correct. अभी value दो types की हो सकती है. उसके पहले मुझे सारे properties लिखने दो. Value के बाद और क्या हो सकता है? Scope and its lifetime. Every variable is having some lifetime and scope. Scope could be either local or global. Lifetime, I will tell you what is a lifetime. Interesting part is to discuss this value part. Value दो types की होती है usually. One is L value. Let me make it a little bit dark. Okay. First one is L value. Second is R value. So someone said memory location or address, right? That is nothing but L value. And R value, L and R basically representing left hand side, right hand side, something like that. So जब आप कहते हो A equal to 10, तो machine के लिए A का मतलब उसका address. Let us say 1000 से continuous 4 bytes अगर उस variable को allocate किए हैं हमारे compiler ने, तो last byte कौन सा होगा? 1003. 3. So correct. From 1000 to 1003, complete memory is allocated to someone whose name is A, right? तो compiler के लिए matter क्या करता है? Left hand side में value. So whenever compiler reads this instruction A equal to 10, it goes to 1000 location and it writes its R value as 10. तो हमारे case में R value है 10, L value है let us say 1000. In yesterday's session you have discussed, you have seen actually in case of functions, call by value and call by reference. वहां पर ये इसी का खेल था, L value, R value. When you pass by value, it means R value, and when you are passed by reference or call by reference, it is dealing with its memory location, right? Address. Now scope, local and global. Local मतलब अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है, let us say void and show, और उसके अंदर
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट अस से int x इक्वल टू समथिंग, देन इस x का स्कोप लोकल टू फंक्शन शो, बस उसी फंक्शन के अंदर इट इज एक्सेसिबल. Once the function call is over, its scope is gone. Instead, अगर आप एक usually हम everything we are calling in main, सारे functions and all that. अगर आप कोई चीज इस मेन के बाहर ऊपर, मतलब आपके जो प्री प्रोसेस डायरेक्टर होते हैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद अगर आपने लिखा int x, राइट, तो इस मेन के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस आप लिखोगे वो सारे फंक्शन इस x को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज ग्लोबल, राइट. सो दैट इज डिफरेंस ऑफ लोकल एंड ग्लोबल. अभी लाइफ टाइम मतलब for how much time variable will be residing in the memory. ये मेमोरी का क्या चक्कर है अभी. Whenever you are executing any C++ or C program, usually आप प्रोग्राम सेव कहां पर करते हो, where you are saving your files, source code files, .c++ files. सॉरी, मेमोरी में कहां पर, जैसे कि लेट मी शो यू. मेरे पास अभी इतने सारे फोल्डर्स हैं मेरे मशीन में, राइट. सी डी या ड्राइव्स है, बेसिकली 3 ड्राइव्स है, सी डी एफ. सो वेयर आई माइट बी स्टोरिंग द प्रोग्राम्स. C drive. ओके, अभी ये डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी माई कमांड प्रॉम्प्ट, माई कंपाइलर इज इंस्टॉल्ड एट द लोकेशन फोल्डर शुभम जो यूजर्स के अंदर है, और ये सी ड्राइव में है, और min GW के अंदर एक बिन डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरे सारे प्रोग्राम्स स्टोर हो रहे हैं. तो बेसिकली वी आर स्टोरिंग अवर प्रोग्राम्स इन secondary storage, right? I will write it as SS, secondary storage, right? C drive, D drive, E drive, F drive, wherever your compiler is allowing you to store that files. But whenever I execute any program, whenever I am running any program, is that program in secondary memory still? No. If your processor wants to process something, that data must be in main memory. And more specific, if I talk, it should be RAM, randomly access memory. RAM is a primary memory और main memory का एक छोटा सा part है जो processor को बहुत close associated है, or it's very near to the processor and it can access it fast. So whenever you are executing any code, for example, अभी मुझे कोई फाइल याद नहीं है, so let us say, let me check, या फिर Eclipse में, for example, ये मेरा प्रोग्राम है कोई तो पॉइंटर एरे नाम का. whenever I am running it, like run as C++ application, what is happening? यहाँ पर आप आउटपुट देखोगे कंसोल में, राइट. सो इट विल एक्सेसिंग योर प्राइमरी मेमोरी. रैम में लोड होता है पूरा सोर्स कोड. सो वेरेवर यू आर स्टोरिंग इट इन सेकेंडरी मेमोरी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, योर प्रोसेसर need to retrieve that and stored in a RAM, because उसको वेरिएबल चाहिए, उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा जो भी यूजर रन टाइम देगा, राइट. सो every program is loaded from secondary memory to primary memory or a RAM or a main memory, and every C and C++ program is getting some memory in the format of stack. अभी stack हम आगे पढ़ने वाले हैं, but just for this discussion of variable scope and lifetime, I will tell you every program is getting some memory as a stack. Okay, इसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं. आपका सोर्स कोड अलग से स्टोर होता है, आपके लोकल वेरिएबल्स अलग से स्टोर होते हैं, आपके ग्लोबल वेरिएबल्स अलग से स्टोर होते हैं, और इसमें और एक कंपार्टमेंट होता है विच इज अ हीप डेटा स्ट्रक्चर टाइप,
जो यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, एवरी C and C++ program is getting some memory from RAM or main memory whenever it is executing. Okay, now let's talk about lifetime. Scope तो हमने किया. Scope is mostly related with memory and it's accessible, whether it is accessible in that block or outside that block. Now what is about lifetime? जब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तब ये पूरा स्टैक डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? And this memory which is allocated from main memory is freed. When you start executing, it was allocated. When you stop your execution, all the local and global variables are freed. Their lifetime is over. They are no more residing in the memory, right? इसीलिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं क्लास में कि whatever objects you are creating, constructor is initializing your objects and destructor का role is to destroy those objects. So lifetime का मतलब क्या है? For how much time that data or that variable will reside in the memory. So usually जितना उस प्रोग्राम का लाइफ टाइम है उतना वेरिएबल्स का लाइफ टाइम होता है. ओके, लोकल वेरिएबल तो जो जब आपका वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, बट इस रैम के मेमोरी में तो वो है. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा तब जाके वो अपना मेमोरी फ्री करके सिस्टम को रिटर्न करेंगे, राइट? सो ये डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि आप स्कोप और लाइफ टाइम का डिफरेंस अंडरस्टैंड कर सके. सो लाइफ टाइम इज बेसिकली रिलेटेड एक्सेस टाइम, आप कितने टाइम तक वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो. स्कोप मतलब प्लेस, लोकेशन, कहाँ एक्सेस कर सकते हो, किस ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो एवरी वेरिएबल इज हैविंग अ नेम, अ टाइप, अ वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ टाइम. और वैल्यू दो टाइप की होती है, एल वैल्यू, आर वैल्यू. एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, which is basically memory location or address of that variable. Clear? इतना कॉन्सेप्ट वेरिएबल के बारे में. Any doubt till this point? No. Yes. Pratham, or who is this? Pratik. No doubt, ma'am. Okay, good. Now we will start with our array data structures. Okay. Is it okay if I use Eclipse? To write programs? I have both Yes, ways. ma'am. या तो मैं नोटपैड यूज करके यहाँ से कंपाइल कर सकती हूँ या फिर Eclipse. Okay. So we will start with arrays first. So I will create a project, C++ project. I will go with Hello World C++ project and compiler as my machine is Windows machine. So we'll select the compiler. Project name I am giving as array1. Once the project is created, it will get open. Yes. So left hand side project explorer is showing me how many or what are the projects created yet. So my project is created and by default ये तो पूरा आपको already मैम ने समझा दिया है, why we write hash include namespace int min and all that part. So we'll not discuss it again. I will run my project directly, but before running I should build my project. So I will say build project. या तो आप राइट क्लिक करके बिल्ड कर सकते हो या फिर Eclipse में यहाँ पर एक हैमर सिंबल है. So whichever project is selected, it will build that automatically. And for running, you can use this green filled circle and one triangle symbol in that. So wait, it's giving output for different project. So let me select this and do run as local C or C++ application. So it has printed hello world. It means my current open file
from my project array1 is working. Now how to create array and what are arrays? So थोड़ा मैं यहाँ पर explain करती हूँ. If you know already, you can tell me, we'll proceed. What are arrays? And why to use arrays? Basically, because we have different types, data types, and we can create as many variables as we want, right? तो फिर array क्यों चाहिए? Suppose I want to create more than one number of values, but of same type. Okay. For example, I want to store marks of you all students for my data structure subject. Okay. तो अभी कैसे हमारे क्लास में 53 students है suppose. Okay. So it is not feasible for me to create 53 different variables of type int or type float. Right. So compiler allows me to create one single variable by any name, but always give the name to variable and data structures which are relevant. आप जो data उसमें store करने वाले हो उस नाम से आप create करते हो तो it becomes easy. So what happens when I say int marks 53? जैसे मैंने variable के लिए एक diagram draw किया था कि memory में क्या होगा, वैसे this is the way to create array. उसको specify क्या क्या करना पड़ता है? Mention the data type, name, and in square bracket size. कितने? Okay, so what will happen in memory when I say int marks 53? So जैसे variable के साथ हुआ कि एक marks, अभी मैं क्या कर रही हूँ? In short, 53 variables, each of type integer, but एक ही name, right? Easy to access and to do some operations. Okay. तो ऐसे 53 continuous blocks मुझे allocate किए जाएंगे. Just imagine these are all 53, or just for the sake of discussion, let us say मैंने 5 का array create किया है. Okay, int marks of size 5. तो मुझे 5 continuous blocks allocate किए जाएंगे by my compiler. Each block is of 4 byte. Okay, assuming that my compiler is allocating 4 bytes for a single integer. Then जैसे हमने वेरिएबल के लिए बोला, it is having a value, name, scope, lifetime, everything is true for my data structure also. Now अगर ये 5 अलग अलग ब्लॉक्स हैं तो इनको एक्सेस कैसे करेंगे? So we will be using this index which can be represented by using square brackets. So I will do it here in the program. So I want to store marks for 5 students, let us say. तो मुझे array create करना पड़ेगा of size 5, right? अब ये 5 अलग अलग students के marks कैसे user से input लेंगे? Should I do like this? Say in marks. अब ये 5 है तो मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे ही अलग अलग index से access करना चाहिए. Should I do like this? No, ma'am. You have. We have to can, use but for if loop there or are while more loop. number, then it's very hectic. Yes. If it is just 2 or 3, may be possible, but not feasible. Okay. So we can use for loop. आपने last session में पढ़ा है, right? कि अगर आप कोई चीज आपको पता है कि fixed number of times आपको repeat करनी है कोई task, then we can use for loop, right? So ये जो index है मेरे array का, which is 5 in this case, so I will use one variable to access that index. Let us say int j, which I will start initialization from 0. So for loop का second part क्या होता है? J less than 5. Correct. Give the condition and then increment. J plus. Correct. J plus plus. Correct. So अभी अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट लिखना है उस फॉर लूप के अंदर तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू आर राइटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट्स देन इट इज मैंडेटरी. सो अगर मैंने ये लिखा मार्क्स एंड जे, आई विल रिमूव दिस लाइन. सेमीकोलन. इन C++ टर्मिनेट एवरी इंस्ट्रक्शन बाय सेमीकोलन. डन. तो ये क्या होगा?
आपके हर एक ब्लॉक में एक वैल्यू स्टोर होगा. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग द इंडेक्स विथ 0. ओके, इसका मतलब इफ आई रेफर इट इन द डायग्राम, तो ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है. इफ यू ट्राई टू एक्सेस समथिंग बिलो बियॉन्ड इंडेक्स 4, इट विल गिव यू एरर. कंपाइलर विल नॉट अलाउ. ऐसा नहीं है कि कंपाइलर के पास मेमोरी नहीं है, बट ये जो वेरिएबल है मार्क्स नाम का, उसका एड्रेस लेट अस से अगेन 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट बाइट क्या होगा? कैन यू गेस? 1004. फर्स्ट बाइट कैसे? आपके पास 5 इंटीजर्स है, हर एक इंटीजर को 4 बाइट्स हैं. तो ये जो 1021. 1021 Yes. 19. 1019. ओके, इतना तो क्लियर है कि आपके पास अगर 5 इंटीजर एलिमेंट है, वो कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहे हैं, एक को 4 बाइट्स लग रहे हैं, तो टोटल 20 बाइट्स लगने वाले हैं. बट स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है. सिंपल मैथमेटिक्स. स्टार्टिंग आपको एरे में एक्चुअली जो थियरी सब्जेक्ट है आपका एफडीएस, उसमें मेमोरी एलोकेशन एंड एड्रेस कैलकुलेशन ऐसा एक अलग टॉपिक है, जिसमें आपको ये फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट है कि हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस of any index from the array, right? So if time permit, I will consider or discuss that or not. Okay, we will only focus on programming part. तो ये जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होना चाहिए? 1019. करेक्ट. तो इसके बाद का परमिशन नहीं है इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, because initially you have declared that marks is an array of size 5, so only 20 bytes starting from 1000 are allowed to access. ओके, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रोग्रामिंग करोगे तो मेनी टाइम्स आपको ना, अभी मैं बस यहाँ पर कमेंट में लिख रही हूँ, ये वाला एरर अगर आपको आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो वो this is one of the reason why you get segmentation fault, because you are trying to access something which is not in your scope or which is not allowed for you to access. Okay, so segmentation fault is that कि या तो वो मेमोरी आपने पहले से डिक्लेयर करके नहीं रखी है कि आप यूज करने वाले हो, और फिर भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट इज वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर है, वो कंपाइल टाइम नहीं. Coming back to our discussion, this will help us to store data in our array. If I run it, let me build it first. So I have built it. Wait, it is building everything. So I just want to build this project. I pressed shortcut Control B, so it started building anything. So I will build only my project array1. And I will run this. So what do you think? Will it give me some output here in the console? Ma'am, first I would clean say the project, I think. Sorry? First clean the project. See, this build for other project is going on, so it's taking time. So I have already selected specific file for my project and I have run that only. Okay. Let me do one thing. It's taking too much time. I will save this file by same name here, array1.cpp. I will go to the terminal and I will say compile
it is printing hello world, but you could see terminal is waiting for me to give some input because in our code the statement written is cin, and it is going to ask me some data for 5 times. Let us say 20, 21, 23, 25, 26, and done. Right? So program has terminated, but no output displayed back. If I want to show back it to the user that out statement I will use, correct? I will say marks of student. अभी कौन से स्टूडेंट के मार्क्स? तो मुझे for loop use करना पड़ेगा. So I will use for loop again. I equal to 0. Remember जब आपने array store किया है तब जहां से indexing start किया है, you should use same throughout your program. So I less than 5, I plus plus. अभी मुझे यहाँ पर more than one instructions लिखनी है, तो मैं इसे block में लिखूंगी. Control X and I will copy it here. Marks of student. अभी मुझे नंबर भी प्रिंट करना है सपोज, तो मैं यूज करूंगी इंडेक्स वेरिएबल i plus 1, राइट? क्योंकि i मैंने एक्चुअली स्टार्ट की है 0 से, बट स्टूडेंट का इंडेक्स बताने के लिए मैं उसे i plus 1 कर रही हूँ. सो नाउ एक्सेस इंडेक्स ऑफ array starting from I itself. Okay, and I will use here endl, which will take me to the new line. Correct? So this is the way to access your array. Now let us run this, save this. I will first compile. Remember one thing, whenever you do any changes to your code, compile it again before you run it. Hello world. So let me give some input, 22, 32, 34, 54, and let us say 45. अभी यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा. मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, नो स्पेस, 22, 32. सो जिस लोकेशन में आपने वो स्टोर किया था उसी लोकेशन से उसने एक्सेस किया है. Let me do this one change. I will add some space here. And okay, just one white space I have added. And I'm compiling it again. So let us say 12, 13, 11, 21, 22. So now you could see something better than earlier. Mark of student 1. I could also assign here operator, assignment operator. Okay, so this is the way how we can access array element, how we can assign value to array. Is it clear? This is just a single dimensional array, one dimensional array. Now, one more interesting thing is, what will happen if I do one thing here? अगर मैंने यहाँ पर एक statement लिखा, cout, and I just pass array name. What do you think? What will happen? Yes. It won't Line display. number 20. It won't display anything. What do you think? Let us try what it is doing for us. अभी इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, ये जो अर्लियर पार्ट है वो मैं कमेंट कर देती हूँ. मुझे ये नहीं फॉर लूप नहीं रन करना है. ओके, बिकॉज मुझे बस उस सिंगल लाइन से आउटपुट क्या आएगा वो देखना है. सो आई विल डू 3 लाइंस. डिस्प्ले का जो है वो कमेंट कर देती हूँ. ओके, save. I forgot to save it. Now I will build it
it's taking some more time. Yeah, no errors as such. Now I will run it. It will again ask me for some input. So I have given just random values. What is this? 0xecfdd 0. Memory address. Correct. Memory address. Yes. Whenever you are accessing any array only by its name, it is printing first bytes address. Now, can I do any operations with it? So, अगर मैंने ऐसे लिखा marks plus let us say 1. What do you think? What will get printed? Next location's address. Okay, let us try that. ये concept actually pointers से related है, but we can try it. If it is giving me any error or it is running fine. Yes, no error as such. Let me run it. Hello world. So it is waiting for some data. See, have you observed? Earlier when I only printed marks, so what is the address? Only the last digit you see. Only the last digit. Earlier it was 0, now it is 4. What is it? Someone said it correctly. Address of Ma'am, 4-bit. Yes, yes. So 0, 1, 2, and 3. First 4 bytes for first element. Second 4 byte for second element. So it's very easy in case of arrays to access or to know the address of specific index element. Correct. So this is way you can access address. जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगी arrays and pointers. Okay. Now let me go back. Can I initialize array statically? अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट नहीं लेना है, फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर लूप, स्टैटिकली ही मुझे कुछ स्टोर करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? एनी गेस? Yes, we ma'am. should be able to do that, because as we can do it for normal variables, we should be able to doing it for array also, right? Let us say I am doing it 10, 20, 30, 40, 50. And now if I don't run this for loop, I will just comment line number 15 and 16 and I will run this for loop. So this way, can I do the initialization? So I will check my code by compiling it. So what change I have done? I have not mentioned the size. Earlier what I said, whenever you will declare array, it is very important to tell the compiler what is the size of that array. But यहाँ पर मैं statically ही initialize कर रही हूँ array को, तो जब compiler ये पूरा instruction read करेगा तब उसको automatically समझ में आ जाएगा कि yes, 5 elements are initialized in this curly bracket. It means size is going to be 5. Let us see whether it is printing the data which we have stored statically or not. It's printed 10, 20, 30, 40, 50. So sorry, initialization of array, runtime taking input from user into done. Students, have you understood it? Yes. If no, ये हुआ one dimensional array. अब suppose student का roll number and their mark is respective करना है. Okay, right. Then can I do it again? Yes, it's a table format में. यहाँ roll number, आगे marks. Okay, so I want this to be roll number and this second column to store marks for my students.
dimensional array Your create voice करूं? is breaking. Ma'am, your voice is breaking. Voice is Okay, breaking, sorry. ma'am. I will repeat. I want to store marks with the roll number of students. Ma'am, you're not For audible. example, Ma'am, you're not audible, ma'am. Your voice is breaking. connected by hear me. Am I audible now? Or again, not. Ma'am, Not your clearly. voice is Still, ma'am. breaking a lot. Still, ma'am, your voice is breaking. Let- Hello. Hello. Yes, sir. Yes, ma'am. ma'am. Now you're audible. Yes, ma'am. Now audible. Okay. I changed my network. तो अभी हमें करना क्या है कि स्टूडेंट के मार्क्स उनके रोल नंबर के साथ स्टोर करने हैं. इसका मतलब मुझे ऐसा टेबल बनाना है, राइट? लाइक दो अलग अलग वन डायमेंशनल एरेज, like a grid or a matrix, you can say. So roll numbers and their marks. So we can do that with two dimensional arrays. So declare कैसे करेंगे? Two square brackets. करेक्ट. बट यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स. Isn't it? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो आपका इंडिकेट करेगा रोज, सेकंड इंडिकेट करेगा कॉलम्स. सो टेल मी, सपोज मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट्स है. For 5 students, I want to store the marks. Then what should I write here? In first square bracket, what will be the value written for declaration? 5. 5. And here, correct. 2. Number of rows 5 and number of columns 2. Exactly. Correct. ऐसा चाहिए ना आपको? Roll number in first column, marks in second column. So this is the way to declare two dimensional array. अभी इसको access कैसे करेंगे? Because I want user should enter the marks. So I will write a statement. Enter marks for each student. Okay, I'm telling this to user. तो single for loop से भी काम नहीं चलेगा, right? I need to write nested for loop. क्योंकि एक for loop से मुझे iterate करनी है rows. 5 रो में डेटा डालना है, right? So outer for loop I will be using for accessing number of rows, and inner for loop I will be using for accessing columns. Correct? What should I write here? Inner for loop में. 2. Less than 2. Correct. Less than 2. Correct. Correct. So I will say I plus plus. Abhi I will write opening bracket for each for loop so that it will become very easy for us to. चलो अभी पहले मुझे रोल नंबर स्कैन करवाना है. So यहाँ पर क्या आएगा? J, correct? And then I want to scan the mark for that respective student. So is it correct if I write like this? C in J followed by I. Let me tell you what is happening inside memory. I hope we have time. 5 minutes, just 5 minutes. Okay.
Once I done with the memory allocation for this 2D array, I'm done. तो मेमोरी कैसे एलोकेट होती है 2D एरे को? 1D एरे के लिए तो हमने देखा कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद दूसरा ब्लॉक। जब मैंने लिखा है कि मुझे एक एरे चाहिए बाय नेम लेटर से मार्क्स, जिसको मैं भी शॉर्ट में लिख रही हूँ 5 and 2, तो 5 2 are 10। ओके, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, starting with index 0 again, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट मेमोरी में तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर होगा, बट जब आप एक्सेस करोगे तब कैसे एक्सेस करोगे? सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, अ टेबल, correct? So I will call this as 0 0 1 2 3 4 0 1। सो जो पहला स्टूडेंट आएगा उसका रोल नंबर जाएगा इस सेल में, लेट अस से रोल नंबर 1, एंड उसके मार्क लेट अस से 10, रोल नंबर 2 मार्क्स 20, रोल नंबर 3 मार्क्स 30, रोल नंबर 4 मार्क्स 40, रोल नंबर 5 मार्क्स 50। बट ये मेमोरी में कैसे एलोकेट होता है? बिकॉज आपका मेमोरी तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वन आफ्टर अनदर, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एरे कॉन्जिक्यूटिव ही मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये जो 1 10 2 20 ये मेमोरी में कॉन्जिक्यूटिवली कैसे स्टोर होगा? सो 0 0 पहले आएगा, सो दिस इज 0 0, देन इज योर 0 1, करेक्ट? तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 10। रो वाइज स्टोरेज कर रहे हैं हम, रो मेजर ऑर्डर, इट इज कॉल्ड एज RMO, रो मेजर ऑर्डर। पहले एक रो कंप्लीटली हम स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली सेकेंड रो, तो रोल नंबर 2 and 20। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 2 and 3 and all, what I should write as per the nomenclature of tabular format? यहाँ पर क्या आएगा बताओ मुझे? इंडेक्स ऑफ, करेक्ट, 1 0 1 0 1 1, 1 1 correct, correct, 2 0 2 0 2 1। 2 1. Likewise, memory is getting allocated and your data is getting stored. Easy? 4 0 5 Yes. 50. Good. This is very important to understand the memory allocation in case of arrays. तो ये हुआ हमारा स्कैनिंग पार्ट, एंड इसको अभी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जस्ट फॉर सेविंग टाइम आई एम डूइंग इट फास्ट। इंस्टेड ऑफ सी इन हियर आई विल डू सी आउट, बट फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ एक रो होने के बाद मुझे मेरा कंट्रोल न्यू लाइन को चाहिए, राइट? एक रो कब खत्म होगा? इस इनर फॉर लूप का एक इटरेशन हो जाने के बाद एक रो खत्म हो रहा है, राइट? तो एक रो खत्म होने के बाद मुझे एक न्यू लाइन और एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक व्हाइट स्पेस। ओके, समझ में आया मैंने क्या किया? रोल नंबर प्रिंट होने के बाद एक स्पेस चाहिए मुझे, या फिर चलो एक कोलन डाल देती हूँ यहाँ पर, कोलन फॉलोड बाय स्पेस। ओके, आई विल बिल्ड दिस and we'll see what is the output of our code. There is error, line number 29 missing. What is missing? Yeah, semicolon is missing here. I build it again. Yeah, no error. I will run it again. Yes, enter marks for each student. तो जो हमने अभी मेमोरी में लिखा वही डाल देते हैं। पहले क्या डालना है? रोल नंबर, तो 1 and 10, then 2 and 20, then 3 and 30, roll number 4 marks 40, roll number 5 marks 50, 10। अभी ये कोलन की वजह से मार्क्स के आगे भी आपको कोलन दिखाई दे रहा है, ठीक है? समझ में आया? रोल नंबर एंड इट्स मार्क्स, रोल नंबर एंड इट्स मार्क्स।
how 2D arrays can be created and accessed using 2 for loops. Understood till this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So before we stop, one simplest problem statement for you. आपको करना क्या है? 2D array में month and number of days. For example, Jan. तो आप string मत store करो, store it as a number. 1 कितने days होते हैं Jan में? 31st. Okay, 31 days. Then 2, 27 or 28. Okay, then 3, 31st. Likewise, array create करो. User से input क्या लेना है? You ask the user day and month. Day and month. For example, अभी मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम नहीं दिखा रही हूँ. I'm just telling you. आपको करना क्या है? Array बनाना है जिसमें month and उसके days store करो. किस month में कितने days होते हैं? Right? Array चाहे तो statically initialize करके रखो. Don't ask this data to user. चलेगा statically किया तो, जैसे हमने first case में 1D array directly initialize किया था. If you don't want it to do static, ask user. उसके बाद user से ये पूछना है, enter month. Let us say I will see it as a month. M. M का input 1 to 12 के बीच में ही होना चाहिए. Then ask day. Day का input 1 to 31 के बीच में होना चाहिए. Okay. After taking this M and D from user, आपको print out या see out क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने डाला मंथ 3 एंड डे 15, मतलब डेट क्या आई? 15th मार्च. तो आपको प्रिंट क्या करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1st 15th मार्च तक टोटल कितने डेज है वो काउंट करवाना है. समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सिंपल है. Yes, ma'am. सिंपल है. सो Ma'am, ट्राई can you टू डू repeat, इट. please? Okay, repeat. Create Yes, an array, create Yes, ma'am. 2D array to store month and respective days in that month. जैसे कि मैंने बोला जनवरी में होते हैं 31 डेज, फेब में होते लेट अस से 28 डेज, मार्च में होते हैं 31 डेज. ऐसे स्टोर करो एरे. ओके. उसके बाद यूजर से पूछो इनपुट फॉर अ मंथ एंड इनपुट फॉर अ डे. सॉरी, इनपुट ले लो फॉर अ मंथ एंड फॉर अ डे. सपोज यूजर ने दिया मंथ 3rd एंड डे 15, मतलब 15th मार्च. आपको डिस्प्ले क्या करना है? डिस्प्ले क्या करना है? 1st जनवरी से लेकर 15th मार्च तक टोटल कितने डेज है वो काउंट करके डिस्प्ले करना है. सिंपल कैलकुलेशन. तो बेसिकली आपको बस 15th मार्च तक के सारे डेज काउंट करने हैं. सिंपली जस्ट एडिशन ऑफ प्रीवियस 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द 2D array. मैंने सॉल्यूशन भी बताया आपको ओरली. आई होप हो जाएगा. I have taken 10 more extra minutes. Yes, Ria. Ma'am, one second, can you show the code? Your Eclipse. Eclipse पे मैंने कुछ नहीं किया डियर. No, I'm the previous one which you are doing. अच्छा, पेंट वाला विंडो. हाँ. टोटल डेज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ. काउंट करके डिस्प्ले करने हैं. यूजर कोई भी मंथ डाल सकता है, कोई भी डे डाल सकता है. ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1st जनवरी ओनली. ओके. ईयर के स्टार्ट से अब तक कितने डेज हुए वो बस काउंट करके डिस्प्ले करना है. दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फाइन. रिया. No, actually, I was asking for the Eclipse, the previous 2D array code which you were doing. You want to see code? अच्छा, ये वाला. This one? Yes, ma'am, that's it. That's it.
लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग जो आपके अभी के इसके लिए वर्क करेगा. अगर आपको 2D अरे भी यहाँ पर इनिशियलाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए फर्स्ट रो नंबर ऑफ रोज देना मैंडेटरी नहीं है बट नंबर ऑफ कॉलम्स देना मैंडेटरी है. तो आप ये यहाँ पर इनिशियलाइज कैसे करते हैं? रो वाइज. तो अभी आपका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मंथ एंड व्हाट नंबर ऑफ डेज. तो आई विल राइट हियर 1,31. एक रो के लिए एक करली ब्रैकेट, राइट. फिर फेब्रुअरी मंथ के लिए दूसरा करली ब्रैकेट. सो आई विल राइट हियर 2,20 कंसिडरिंग लीप ईयर आई एम राइटिंग. फिर तीसरा क्या है? मार्च 31st March. Likewise, you can initialize your array, 2D array. Okay. I'm done from my side for today's session. I hope you all understood whatever we have done. It was very basic thing which we did today. Maybe many of you were already knowing also, but it might be a refreshing kind of thing for those students. Chalo, I will stop recording for now. Please do